Okay, so in the last lecture we saw what is linear expansion. आज हमको देखना है aerial expansion, and aerial expansion is also called as superficial expansion. So it is a very simple thing. So in this case we have a square plate. मान लो हमारे पास जो substance है it is in the form of plate. एक square plate है जिसका area A है यहाँ पे. So this is a square plate with some initial area A. ये एक्चुअली लीनियर एक्सपेंशन का ही एक्सटेंशन है बेसिकली. वाई एक्सटेंशन? बिकॉज इफ आई हैव दिस एरिया ए, तो जब स्क्वायर प्लेट की बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेट में दो साइड्स होते हैं, एंड व्हेन आई हिट दिस तो दोनों साइड एक्सपैंड होंगी. सो इट इज एज गुड एज सेइंग कि वी हैव टू रॉड्स. तो दोनों रॉड एक्सपैंड होंगे, पहला भी एक्सपैंड होगा, दूसरा भी एक्सपैंड होगा, तो ओवरऑल देयर विल बी इंक्रीज इन एरिया, राइट. सो जैसे आपने लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन किया था वैसे आप एरियल एक्सपेंशन डिफाइन कर सकते हैं. इफ यू रिमेंबर हमने बोला था द एक्सपेंशन और द इलोंगेशन और द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ अ रॉड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन. यहाँ पे आप बोलोगे द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ प्लेट, right, due to heating or due to increase in temperature, that will be called as aerial expansion. तो exactly similar lines पे if you remember हमने बोला था fractional change in length, कल ही लिया था हमने ये. fractional change in length मतलब delta L by L is proportional to change in temperature or increase in temperature. तो यहाँ पे हम लोग instead of saying fractional change in length यहाँ पे हम बोलेंगे fractional change in area. So delta A by A is proportional to delta T. So delta A by A is equal to some constant beta into delta T, where beta will be called as coefficient of aerial or superficial expansion. Coefficient of aerial or superficial expansion. All right. तो exactly same lines पे ही हमको ये करते जाना है. And if you remember, तो beta is equal to delta A by A delta T. फिर इसको हम डिफाइन करने के लिए बोलते हैं AT, area at some higher temperature, minus A0, area at 0 degree Celsius, upon initial temperature is A0, some higher temperature minus initial temperature. क्योंकि डेल्टा है मतलब इंक्रीज इन एरिया. इंक्रीज कैसा होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू. वही किया हमने. डेल्टा ए इज फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू एंड डेल्टा टी इज फाइनल माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको कल बताया था वैसा आपको आज भी करना है. तो यू कैन से AT इज एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट at some higher temperature T degree Celsius. A0 is area at initial temperature और initial हमने 0 degree Celsius लिया था. तो T is higher temperature, some temperature, और T0 is initial temperature that is 0 degree Celsius. तो डिफाइन करने के लिए एग्जैक्टली सेम लाइंस पे हमको क्या डिफाइन करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन. तो जैसे कल हमने बोला था वैसे आज भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. सो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइट. तो सिंपल है, एग्जैक्टली वैसा ही डिफाइन करना है जैसे हमने कल डिफाइन किया था. हमको अगर बीटा डिफाइन करने के लिए बोला है, हमारे पास बीटा का फॉर्मूला है. यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग बीटा के लिए? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट. तो पहले केस में सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा था, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है. एंड देन इफ यू रिमेंबर हमने बोला था कि हम डिफाइन करते वक्त 0 डिग्री पे डिफाइन करेंगे, लेकिन जब मैं हायर टेम्परेचर पे डिफाइन करता हूं बीटा को तो मैं लिखता हूं A2. A2 is area at temperature T2 minus A1. A1 is area at temperature T1 upon
A1 इनिशियल एरिया एट टेम्परेचर T1, T2 माइनस T1। तो हम इन जनरल इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज बीटा डजंट चेंज मच विथ टेम्परेचर। 0 डिग्री हो या ज्यादा हो, उस पर ज्यादा चेंज होता नहीं है वो। तो इन जनरल यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट एट सम अदर टेम्परेचर। ओके, सो आई विल रिपीट एवरीथिंग अगेन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये तीनों के तीनों टॉपिक एक्चुअली इट्स द सेम। अब हम कंपेयर भी कर लेंगे साथ में। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने एक रॉड लिया था जिसका लेंथ L था, फिर उसको हमने हीट किया तो इसका लेंथ इंक्रीज हो गया था। मान लो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मान लेना, तो L एंड डेल्टा L, राइट। तो इफ यू रिमेंबर हमने बोला था द एक्सपेंशन और इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ अ रॉड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन, राइट। तो कितना चेंज हुआ लेंथ में? तो डेल्टा L या फिर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ was proportional to increase in temperature। अब अगर हमारे पास एक रॉड की जगह पे दो रॉड है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो जब हम हीट करेंगे तो दोनों का लेंथ बढ़ेगा। और क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है बेसिकली, तो स्क्वायर प्लेट है तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर प्लेट मैंने आयन की बना दी तो पूरा मटेरियल आयन ही है, राइट। ऐसा तो नहीं है एक जगह पे कॉपर है फिर बाकी जगह पे आयन है, इट डजंट हैपन लाइक दैट। मेरे पास एक प्लेट है तो मैंने पूरा वो प्लेट एक ही मटेरियल से बनाया है, मतलब मैं जब उसको हीट करूंगा तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल चेंज होगा। तो जब आप एरियल एक्सपांशन की बात करते हो तो व्हाट हैपेंस इज एरिया इंक्रीजेस। एरिया कितने से इंक्रीज हुआ? तो ये जो यू आर लुकिंग हियर, दिस पार्ट वन इन द रेड इज डेल्टा ए, दिस इज इंक्रीज इन द एरिया। तो इनिशियल एरिया जो है दैट इज shown in the blue color और increase in area is shown here in the red color, so this is basically increase in area, right? So this is delta A, increase in area। ये increase in area क्यों हुआ? Because of heating, because of increase in temperature। So delta A by A is proportional to increase in temperature, simple। So delta A by A is equal to some constant into delta T, right? Good। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल क्योंकि सरफेस बढ़ रहा है। आप एरिया को सरफेस भी बोलते हो। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पैड ओवर हियर एंड इट हैज सम सरफेस, तो इसको हीट किया तो इसका सरफेस बढ़ेगा, इसलिए सुपरफिशियल एक्सपांशन बोला जाता है उसको। तो सिमिलरली यू कैन डिफाइन बीटा एज डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी, राइट। सो डेल्टा ए मतलब इंक्रीज, मतलब एरिया एट हायर टेम्परेचर माइनस एरिया एट इनिशियल टेम्परेचर अपॉन एरिया एट इनिशियल टेम्परेचर T minus T0। डेल्टा T इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो एज यू रिमेंबर मैंने इनिशियल टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, तो A0 हो गया एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने T को सम हायर टेम्परेचर लिया है तो AT हो गया एरिया एट हायर टेम्परेचर। तो डिफाइन करने के लिए किसको? बीटा को। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन को डिफाइन करने के लिए क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरियल एक्सपांशन कैन बी डिफाइंड एज द change or increase in area per unit original area at 0 degree Celsius for 1 degree change in temperature। हो गया डिफाइन। और इन जनरल अगर मैं 0 डिग्री पे नहीं डिफाइन करना चाहता तो आई कैन से A2 minus A1 where A2 is area at some temperature T2 and A1 is area at some temperature T1 upon A1 T2 minus T1 where T2 is greater than T1। तो यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हमने नहीं लिया, सिंपल। सो इफ यू वांट टू मेक नोट्स तो आपको एग्जैक्टली यू कैन एग्जैक्टली फॉलो द सेम ट्रेंड जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एग्जैक्टली सेम आप कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले एज आई टोल्ड यू प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है फिजिक्स में लिखने में। आई हैव सीन दिस
in my experience of last 8 years, सब पता होता है, लिख नहीं पाते. What is so difficult? Start कहाँ से करेंगे? Aerial expansion क्या है पहले वो समझा दो. So how you can say is the expansion of surface area of a substance due to thermal energy या फिर due to increase in temperature, due to thermal energy or increase in temperature is called as aerial expansion. तो ये आपने पहले डिफाइन कर दिया. Then you have to say that let us consider the substance in the form of square plate of area A. So consider the substance in the form of square plate of area A, right? अब ठीक है, you are smart enough. स्क्वायर प्लेट भी स्क्वायर ही होता है और स्क्वायर भी स्क्वायर ही होता है, so it doesn't matter really. Square plate of area A, right? Then let us increase the temperature of the plate by delta T by a small amount, delta T, right? Okay, because of increase in temperature the area will also increase, so let delta A be the increase in the area, be the increase in the area of the square plate. Okay, so fractional increase in area is proportional to dt. It has been observed that it is seen that fractional increase in area is proportional to change in temperature, or better, increase in temperature. Increase in temperature delta T. Okay. Therefore, as we know, delta A by A is directly proportional to delta T. Then वो जो कोएफिशिएंट लिखेंगे we'll call it as beta. Therefore, delta A by A is equal to some constant B into delta T, where beta is constant of proportionality called as coefficient of aerial or superficial expansion. Coefficient of aerial or superficial, क्योंकि यहाँ पे surface area बढ़ने वाला है इसलिए superficial expansion. Next step was to write down beta in terms of change in area upon original area into delta T.
Then next step was to say this is AT minus A0 upon A0 T minus T0. क्योंकि हमने बीटा को जैसे अल्फा को वैसे बीटा को आगे गामा आएगा उसको भी हम 0 डिग्री पे डिफाइन करते हैं, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे अब जस्ट मेंशन स्टार्टिंग करना where you have T0 as initial temperature, that is 0 degree, initial temperature which is 0 degree Celsius. Then you have T which is some higher temperature, final temperature, and AT is nothing but area at temperature T, at final temperature T, and A0 is nothing but initial area at 0 degree Celsius. And you already know delta T is increasing temperature and delta A is increasing area. Increase in area and delta T is increase in temperature. तो क्या डिफिकल्ट है? इट इज नथिंग. मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ फिजिक्स इज द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट. क्यों सिंपलेस्ट सब्जेक्ट? क्योंकि कुछ याद ही नहीं रखना. इट इज जस्ट यू जस्ट हैव टू फ्लो. जैसे लिक्विड फ्लोस, वैसे एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, लिखते जाओ. नथिंग, इट्स एब्सोल्युटली नथिंग. सिंपल सिंपल चीजें हैं. then if you remember to define अल्फा, जैसे आपने अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने अल्फा को डिफाइन करने के लिए व्हाट डिड वी डू? इफ यू रिमेंबर, हमने इनिशियल लेंथ को 1 मान लिया था. यहाँ पे भी इनिशियल लेंथ को 1 मान लेंगे, बट 1 व्हाट? उसमें 1 मीटर था, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर होगा, राइट. डेल्टा टी को वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस माना था, यहाँ पे भी 1 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे. तो फिर आप बोल सकते हो इफ initial area is 1 unit square, 1 meter square, and if delta T is 1 degree Celsius, then you have beta as AT minus A0, right? Which means that you can now define beta as coefficient of aerial expansion can be defined as increase in length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree rise in temperature. So what big deal? Nothing. So therefore coefficient of aerial or superficial expansion can be defined as increase in area per unit original area at 0 degree Celsius for 1 degree centigrade rise in temperature. Centigrade rise in temperature. और जैसे अल्फा की वैल्यू डजंट चेंज मच विद टेम्परेचर, वैसे बीटा भी डजंट चेंज. ऑल्सो द वैल्यू ऑफ beta does not change a lot with temperature, and hence we can write beta as generally A2 minus A1 upon A1
T2 minus T1, where T1 is initial temperature which is not zero, not necessarily zero. तो ये जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग. इनिशियल टेम्परेचर, T2 is final temperature, A2 is, of course you need to write T2 is greater than T1, नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एक्सपांशन की जगह पे इट विल कॉन्ट्रैक्ट. तो you need to specify, of course here T2 is greater than T1, so A2 is final area and A1 is initial area, or of course because T2 is greater than T1 so A2 is greater than A1. So logical है ये, right? So done. This is how you can actually write down. और बीटा का जो यूनिट होगा that is same जैसे अल्फा का था, पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन. सो ऐसा यूनिट ऑफ बीटा इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन. क्यों? क्योंकि एरिया अपॉन एरिया डायमेंशनलेस और नीचे सिर्फ टेम्परेचर है, तो हो गया ये सिंपल. ओके, सो एंड आई होप इट इज वेरी सिंपल क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे. तो अब नेक्स्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग इज लेंथ बढ़ गया, सरफेस का बढ़ना भी देख लिया, अब हमारे पास बचा है वॉल्यूम का इंक्रीज होना. तो नेक्स्ट टॉपिक मस्ट बी इन द लिस्ट विच इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. लेंथ मतलब वन डायमेंशनल रॉड, वन रॉड. एरिया मतलब टू डायमेंशनल रॉड, टू रॉड्स. तो वॉल्यूम विल बी थ्री रॉड्स. थ्री रॉड्स मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्यूब लेता हूं. So I'll take a cubical box here. So I have something like this. ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है. तो हमारे पास एक क्यूब है समथिंग लाइक दिस विथ ओरिजिनल वॉल्यूम V. ये ओरिजिनल वॉल्यूम V है इसका. अब मैंने इसको हीट किया. दिस इज थ्री डायमेंशन. देखो तीन रॉड है यहाँ पे. आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट से थ्री रॉड्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. क्योंकि एरिया में भी अगर आप बात करोगे तो एक दो तीन चार चार रॉड्स थे, तो हर एक रॉड एक्सपांड हो रहा था. तो यहाँ पे आई डोंट वांट टू काउंट जितने भी होंगे, बट इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. अब अगर मैं इसको हीट करता हूँ, तो इसको हीट करता हूँ तो व्हाट विल हैपन इज ईच फेस will undergo expansion. हर एक फेस या ओवरऑल बोलोगे पूरा स्ट्रक्चर ही एक्सपांड होगा. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. राइट, तो ये तो हो गया उसका फ्रंट फेस. तो overall there will be expansion in the volume. तो ये ऐसा एक्सपैंड हो जाएगा. राइट, so it is difficult to show क्योंकि I mean of course we are trying to show three dimensional structure on a two dimensional plane, तो थोड़ा difficult होता है दिखाने के लिए. So but it's okay, we'll try if we can show, otherwise I have to find out some other way of doing it. All right, I know sometimes I waste time in doing things, but I need to be particular. मुझे ये exactly जिस तरीके से दिखाना चाहिए वैसे दिखाना है. मान लो ऐसा है, ठीक है, whatever it is. So ये हो गया फाइनल वॉल्यूम आफ्टर यू हैव हीटेड इट. ऐसा एक
बन जाएगा वो, राइट, मोर और लेस। ओके, तो अदरवाइज और भी सिंपल तरीका है इसका। इसको अगर ऐसा नहीं दिखाना है, यू कैन जस्ट शो अ स्फीयर विथ वॉल्यूम v एंड another sphere with volume v plus delta v. So same है, it's the same thing. If you don't want to do this, so let's go for that particular shape. And sphere is the best shape that you can have. ये बहुत simple होता है. So let's say we have a metallic ball of volume v, and when we hit it, its volume increases equally in all directions. So इक्वल इंक्रीज होना चाहिए। पार्डन मी फॉर माय ड्राइंग, आई एम नॉट गुड एट इट, सो डजंट मैटर रियली। तो मान लेना ये है इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। एक्सपांड क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमने हीट किया था उसको। तो वापस से वही सेम स्टोरी रिपीट्स अगेन इन 3 डायमेंशन, दैट यू से fractional change in volume is proportional to increase in temperature. Then you say fractional change in volume is equal to some constant gamma delta t. ये gamma फिजिक्स के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसका मतलब होता है। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है। अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखोगे तो गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, सीपी बाई सीवी, वो आगे सीखेंगे हम लोग। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में हो तो गामा इज समथिंग विच टेल्स यू व्हाट हैपेंस to the mass of an object when it is moving with very high speeds, relativistic speeds, मतलब speed of light की स्पीड से कोई अगर मूव हो रहा है तो what will be the change in mass, तो that is gamma factor। तो ये gamma अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अलग मतलब होता है, तो ध्यान रखना हर जगह पे। Here we are talking about volume expansion, so this gamma will be called as coefficient of volume expansion। तो सिमिलरली यहाँ पे gamma आपको मिलेगा डेल्टा v बाई v डेल्टा t। फिर वही स्टोरी रिपीट करोगे आप, द सेम थिंग, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फिर आप बोलोगे वेयर T0 इज 0 डिग्री सेल्सियस, सो V0 इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, Vt is volume at some higher temperature T and T is at higher temperature। फिर आप बोलोगे if V is 1 meter cube and we already know delta T अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो gamma will be Vt minus V0। फिर आप डिफाइन करोगे coefficient of volume expansion is defined as the increase in volume per unit original volume at 0 degree Celsius for 1 degree rise in temperature, खत्म, right? ओके, फिर इन जनरल आप बोलोगे इन जनरल gamma is V2 minus V1 upon V1 T2 minus T1, correct, right? Good, then सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसा है फॉर द केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इट इज सीन दैट ये जो गामा फैक्टर है इट आल्सो वेरीज विद टेम्परेचर। जैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होती, बट इन दिस केस गामा वैल्यू फॉर अ गिवन मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गामा की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी एंड देन इट रीचेस अ कांस्टेंट वैल्यू। सो एट हायर टेम्परेचर्स गामा इज कांस्टेंट, right? So this is where it is little different as compared to linear and aerial case, क्योंकि लीनियर में हमने बोला था कि अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री पे भी सेम है, इसलिए हम इन जनरल बोल देते हैं L2 minus L1 upon L1 into T2 minus T1। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे it varies with temperature। तो this is the point that we need to consider, okay? तो ये हमको देखना पड़ेगा।
So let's put it down in the form of notes and then we will be done with this particular topic. फिर न्यूमेरिकल्स लेंगे if time permits. Right. So to define this, it's exactly the same way. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था the expansion of surface area of a substance. यहाँ पे बोलोगे the expansion of volume of a substance due to thermal energy is called as volume expansion. Then consider a metallic sphere of volume V. मेटालिक स्फीयर ही लेना है हमको क्योंकि हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और लिक्विड्स की बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम कंटेनर के शेप के साथ चेंज होता है, राइट. इफ आई हीट लिक्विड, और जो लिक्विड जिस कंटेनर में होगा हीटिंग के साथ वो भी एक्सपांड होगा और लिक्विड भी एक्सपांड होगा, तो उसमें दोनों एक्सपांशन देखने पड़ेंगे. यहाँ पे हमको, इसलिए मैंने मेटालिक स्फीयर बोला है, so that you understand that we are talking about just one expansion here. So consider a metallic sphere of volume V. Okay, let delta T be the increase in temperature of the sphere. Right, then because of increase in temperature, its volume increases by delta V. Simple. The fractional change in volume, I would better say fractional increase, क्योंकि change मतलब decrease भी हो सकता है. So the fractional increase in volume is seen to be directly proportional to increase in temperature, that is delta T. Therefore, we have delta V by V proportional to delta T, and therefore we can write delta V by V is equal to gamma delta T. Therefore, you can write gamma is nothing but delta V by V times of delta T. And again, you can say this is Vt minus V0 upon V0 T minus T0, where of course gamma is a constant of proportionality called as coefficient of volume expansion of that particular solid, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा. कॉपर के लिए अलग, आयन के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, एंड सो ऑन सो फोर्थ. So coefficient of volume expansion of a given material, and of course T0 is initial temperature that is equal to 0 degrees Celsius.
and T is final temperature, V0 is volume at 0 degree, and Vt is volume at T degree, volume at T degrees Celsius, right? Now if I set, हम बोल सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री इज 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब लेते हैं उसको, and also if I take change in temperature to be 1 degree Celsius, then I have gamma as Vt minus V0. फिर आप डिफाइन कर सकते हो, therefore coefficient of volume expansion is defined as the increase in volume per unit original volume, at 0 degree Celsius for 1 degree centigrade rise in temperature. ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 केल्विन का नहीं कर सकते आप लोग. This is for 0 degree Celsius because 0 Kelvin means something else. So for 1 degree centigrade rise in temperature. Okay. अब जो डिफरेंस था, अनलाइक अल्फा एंड बीटा, gamma varies with temperature. It is seen that for some materials, gamma increases with increase in temperature, with increase in temperature, and reaches a constant value, या फिर and becomes constant at higher temperature, and becomes constant at higher temperature as shown in figure below, as shown in figure below. तो बहुत सिंपल सा केस है. You have y-axis as gamma, x-axis as temperature axis. तो ये है gamma, ये है temperature, and the graph will be something like this. अब ये exact values कितनी है, I'll have to check because it depends on material to material. मुझे देखना पड़ेगा कि at what temperature normally it becomes constant. So at around 500 Kelvin it becomes constant. So this point is around 500 Kelvin, right? और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है उन्होंने, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस बट ठीक है, 3 to 6. और ये गामा की वैल्यू जो है, दिस गामा इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ 10 पावर माइनस 5. मतलब जब मैं 3 लिख रहा हूँ, मतलब इट मीन्स 3 into 10 पावर माइनस 5 पर केल्विन. तो ये 10 पावर माइनस 5 पर केल्विन में है ये. तो इफ आई राइट 6, दैट मीन्स 6 into 10 पावर माइनस 5. तो गामा इज पर केल्विन, या फिर पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, बट इट्स ओके, पर केल्विन. Okay, so
वी आर डन विथ एक्सपेंशन, लीनियर हो गया, उसके बाद एरियल हो गया, वॉल्यूम हो गया। वी हैव सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑन लीनियर एक्सपेंशन। तो एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन के problems will go into next session. So we'll continue this point onwards in the next session.